अब हम टू कॉइल्स के बीच हम एनर्जी लेवल और डिसाइड करेंगे। तो ये कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड बाय कपल इंडक्टर। तो कंसीडर टू कॉइल्स आर दैट magnetically linked coil first in N1 and second is this is the coil in the terms of N1 and terms N2. Primary coil is the N1 and secondary coil is N2. At the flow of the current I1 and I2 due to the externally applied source of the EMF E1 and E2. This is the flux of these E10 and this is the flux is 20. Value of E equal to d phi 10 upon dt. This is the value of d phi 20 upon dt. First and second. Similarly, the time varying of the coils in inductions of the value of first. So in coil, first of these L di upon dt, second is the first minus k. In the I1 in function of the well induction coil in L1 di1 upon dt to d phi upon dt equal to L di1 upon dt तो L1 के साथ ये I2 होगा d phi upon dt equal to d I1 upon dt और सेकेंड कॉइल के लिए आपका हो जाएगा द वैल्यू ऑफ I1 एंड म्यूचुअल इंडक्शन तो आपका हो जाएगा d phi upon dt माइनस के I1 और ये माइनस के M12 di2 upon dt एंड सेकेंड केस के लिए आपका हो जाएगा d phi upon dt इक्वल टू माइनस के L2 और di2 upon dt और d phi म्यूचुअल इंडक्शन आपका हो जाएगा माइनस के M21 और di2 अपॉन dt। तो फर्स्ट के लिए तो फर्स्ट कॉइल रहेगी और सेकंड के लिए सेकंड करंट रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। तो वैल्यू ऑफ इंडक्शन इज द I2। वी assume that the resistance of the coil in the negligible, but in the value of resistance are always 0, यानी कि resistance are defined as 0 and R is the mutual coil of the resistance is 0. So total is the potential is the E1 is equal to first is the total potential E equal to minus k L1 di1 upon dt plus minus k M और ये di1 upon dt। तो mutual is the M di upon dt। तो flow of the current is the first is the di1 upon dt and current is the Mi2। तो 1 2 is equal to ये हो जाएगा 2 के साथ and second is the minus के L di2 upon dt और plus minus के M 21 di1 upon dt। So this is the potential is always same E or define of the value of equal thus the rate of the work done of the first coil and second coil, first and second coil। तो P is equal to dW1 upon dt। तो आप कह सकते हो dW1 upon dt और power is consumed the first in the case of, तो power is the first coil first power P1 is equal to dW1 upon dt is the value of E, करंट इज I1, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के L di1 अपॉन dt और प्लस माइनस के M12 di2 अपॉन dt इनटू करंट इज I1। करंट इज I1 is the first power and second is the power of the coil, second is the power of the coil P2 is equal to dW2 upon dt is the value of EI2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के L2 di2 अपॉन dt और प्लस माइनस के M21 di
I1 upon dt and flow of the current I2. Flow of the current I2, both are multiplied in the power. तो total sum of the power आपकी डिफाइन हो जाएगी, total sum of power P equal to P1 plus P2. So this is the value in the total power P equal to dW upon dt और ये P1 plus P2 डिफाइन the value of minus के L1 I1 d I1 upon dt और प्लस माइनस के M12 I1 d I2 upon dt एंड प्लस ये माइनस के L2 I2 d I2 upon dt और प्लस माइनस M21 d I2 और d I1 upon dt। इसमें से वो वैल्यू कॉमन ले लीजिएगा, तो ये TW अपॉन dt इक्वल टू और ये माइनस के L1 I1 d I1 अपॉन dt और माइनस के L2 I2 d I2 अपॉन dt और प्लस माइनस के और ये आपका हो गया M12 I1 d I2 अपॉन dt और प्लस M21 I2 d I1 upon dt. In the total combinations of the two inductance coils of L1 and L2, is the value of the find in total sum of value. But in the case of a product value of this M1 is equal to M2, is the M12 is equal to M21. is the value of minus k, ये L1 I1 d I1 upon dt और प्लस L2 I2 d I2 upon dt और प्लस माइनस और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी M1 M21 M1 and M21 so be the combination of the equation plus minus k M d upon dt in I1 and I2, तो आप यहाँ लिख सकते हो M d I1 I2 upon dt. You can calculate of the value. ये वैल्यू आपकी हो जाएगी M12 I1 d I2 upon dt is the value of M12 I1 M12 I1 M12 I1 d I2 upon dt और प्लस M21 I1 d I2 this is the I1 is the I2 to d I1 upon dt. In the case of the finalized value of, so value of dW upon dt is equal to minus k L d L1 I1 d I1 upon dt plus L2 I2 d I2 upon dt plus minus k M d upon I1 I2 upon dt. Right? This is the factor of total energy level of defined. Total energy level of defined W is equal to, this is the value of total energy level is defined by indications of the value L1 और ये is the value of I1 d I1 0 to I1. Okay, this is the indications of the value. In second coil is the value of plus L2 0 to I2, value of I2 d I2 plus minus M, indications of I1 I2 0 to I1 I2 d I1 I2. So total energy level is the define of total energy level
स्क्वायर 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस 1/2 L2 I2 का स्क्वायर प्लस माइनस के M D I1 I2 is the mutual inductions of the total energy level. Thus, this is the energy stored is the mutual inductions of defined of the energy field. First of the two terms represented self energy, the last term the representing interactions energy. Interactions energy, we have a relation by the generalizes by the N-couples rule. Again we define the total energy level is W is equal to, that means E is equal to 1/2 L1 I1 square plus 1/2 L2 I2 स्क्वायर प्लस माइनस के M और ये I1 और ये I2. Find the total energy level of the two couples of the coil L1 and L2. Thank you very much.